हम लोग तो पता है जो एसिड है क्लास पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। एसिड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस। ओके, एसिड का जो वर्ड है वो आता है मेरा लैटिन वर्ड एसिडस से, जिसका मीनिंग होता है, मीनिंग इज सॉर इन टेस्ट। ओके, हम लोग लैटिन वर्ड एसिडस से भी आता है, और एक वर्ड होता है एसेल, दोनों का ही मतलब होता है सॉर इन टेस्ट। ठीक है, तो एसिड the word comes from the Latin word acidus or acid, which means in solid taste. So the basic definition in lower classes tells about the acid is the substance which is solid in taste. Okay, the substance which is solid in taste is known as acid. Is known as acid. But this is the basic definition for the very lower classes. But in class 10, 11, 12, we have to write another definition of acid. Like, first of all, generally we have to remember that acid, substance which sour in taste are acid, and the substance which is bitter in taste are base. But generally acid contain H plus ion. Okay, and base contain metallic oxide, or bases are metallic oxide or hydroxide. Okay, or non-metallic ammonium solution. Those are base. So, what is the definition of acid? The substance which are H plus donor are known as acid, and the substance which are OH minus donor are known as base. Okay, the simple definition that is we have to consider in at present, that is, acid means the substances which ionizes H plus ion in aqueous medium, okay, and produced H3O plus ions are known as acid. कोई भी substance, any substance, if in water medium, aqueous medium, releases H plus ion, that's when it is acid. Suppose we pour this pen into the water, if H plus will come from this pen, then this pen is known as acid. So, to release H plus ion, the substance must have in one hydrogen. Okay, so acid contain hydrogen atom in the form of H plus ion. H plus is known as simply proton. Yes, sir. Okay. This is general. Okay, there will be some exception where no hydrogen present, but some compound behaves like acid. That will be another part. Will be in 11. Okay. So examples of acids are HCl,
H2SO4, HNO3, acetic acid, etc. Okay. These are the examples of acid. And in our syllabus, we will read about these acids preparation and all, etc. These acids are inorganic acid or man-made acid. Okay, that will be the next classification. That this acid we can prepare in our laboratory. That's why it is known as man-made acid. And some acids found in nature, naturally occur in human being, human body, some plants, some animals contain some acid. Those are known as naturally occurring acid. As we know, acetic acid present in which compound? Vinegar, sir. Vinegar. Uh, sour milk, Yes, sir. which contain So milk acetic में acid is not हाँ a man-made acid. नहीं सुनाई दिया. Yes, sir. In milk, which acid is present? The milk, lactic हाँ acid. lactic acid. So acetic acid is a man-made acid or natural acid? Acetic acid is the man-made acid. Okay, sir. Sometimes it is found in uh, no acetic acid. No, acetic acid is organic acid. Means it is found in some natural compound. Okay, not man-made organic acid. Apple, apple contains which acid? Tartaric acid. No, apple contains malic acid. Oh, yeah, malic acid. Yeah. Okay. Tomato, Tomato. Citric acid. tomato contains oxalic acid. Okay, sir. Okay. So, but it is sour in taste, so I thought it was citrus acid. Sorry, citric acid. Citrus in taste, but that taste will differ as the concentration of acid. Like Okay. lemon, those lemon contains the acid which is present in high concentration, but apples, tomatoes present is the low concentration, and that's why different acid, different concentration. That's why it tastes vary. Okay, sir. Next, sting of bee, Formic acid. formic acid. Sting of bees contains formic acid. Okay. Lemons, oranges, those contain citric acid. Yes, sir. Okay. हाइड्रोजन मेनली कॉमन है सब एसिड में. नाउ अब ये H3O प्लस जो है ये फॉर्म कैसे होता है ना, जब ये सारे एसिड से यहाँ से जब H प्लस आया वाटर में. So remember, in chemical bonding, we have read that water having two lone pair on oxygen. By one lone pair, water attach this H plus present in it. Okay, so it is H3O plus. Yes, sir. Okay, this is known. This is named as
हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। बुक में और भी एसिड सोर्स दिया हुआ रहेगा, उसको याद कर लेना है। लाइक टेमालाइन में कौन सा एसिड रहेगा? टार्टरिक एसिड इस बार। टार्टरिक एसिड, ठीक है। तो एप्पल में मैलिक एसिड है, एप्पल में और भी टार्टरिक एसिड भी है, एप्पल इज द सोर्स, ठीक है। फिर टमाटो में ऑक्जेलिक एसिड है, टमाटो में मैलिक एसिड भी है। तो ऐसे सोर्स दिया हुआ है तो वो सोर्स याद कर लेना। लाइक फैट कंटेंट स्टीयरिक एसिड, यस सर। फैट्स कंटेंट ठीक स्टीयरिक है। एसिड। तो ये सब याद कर लेना। नेक्स्ट हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड लेवल देखे। क्लासिफिकेशन पैदल आए। तो डिफरेंट डिफरेंट वे में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट एसिड को क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट अगर देखते हैं हम लोग डिपेंडिंग ऑन देयर सोर्सेस, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस, acids are two types. One is organic acids, and another is inorganic acid. Organic acid means naturally occurring acids, okay, or acids present in natural plants, animals, called organic acid, okay. Like examples, देखो एप्पल्स, टोमेटोज, लेमन, ये सब क्या है? ऑर्गेनिक एसिड पे। सो ऑक्सैलिक एसिड हुआ, मैलिक एसिड होगा, विनीगर भी है, ठीक है, दैट्स वाई एसिटिक एसिड। ये सब हुआ मेरा ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड का याद रखना, ऑर्गेनिक एसिड आर दोज आर वीक एसिड, ठीक है। वीक एसिड होने के लिए क्या होता है? दे डू नॉट आयोनाइज कंप्लीटली, वो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता है। सपोज एसिड में ऑक्सैलिक एसिड के पास 100 एटम्स ऑफ H प्लस थे, लेकिन उसमें से 30% ही आयोनाइज हो सका। दैट्स व्हाई कंप्लीट आयोनाइज नहीं होता है, बिकॉज वो वीक एसिड है। ओके सर। इट इज नोन एज पार्शियली आयोनाइज। कंप्लीट आयोनाइज नहीं होता है, 30% होता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पार्शियली आयोनाइज। So organic acids are weak acids. They do not ionize completely, and they are found in or obtained from the natural sources, that is plants and animals. Okay. Next, inorganic acids. ये सारा ऑर्गेनिक एसिड का पार्ट है, ठीक है। ये सब ऑर्गेनिक एसिड का पार्ट है। नेक्स्ट, इनऑर्गेनिक एसिड। तो इनऑर्गेनिक एसिड का डेफिनेशन क्या होगा? जो हम लोग मिनरल से बनाते हैं, ठीक है, which are obtained from the mineral. The acid acid
which are obtained from minerals are known as inorganic acid. ठीक है, like HCl, hydrochloric acid, H2SO4, sulfuric acid, HNO3, nitric acid. Those are mineral acid. Now, if organic acids are weak acid, so inorganic acids are strong Strong acid. acid. Organic acids partially ionized. Inorganic acid Completely ionized. completely ionized, or they do complete ionization. Okay. These are sometimes known as man-made acid because we are obtaining it from minerals. We can prepare these acids in laboratory. That's why those are known as man-made acids. Yes. This is the basis of resources. Next, on the basis of strength. So on the basis of strength, there is only two type acid, that is weak acid or strong acid. So look at here. I have already told weak acid and strong acid. So which one is weak acid? Those acids which do not ionize completely are known as weak acid. Those acids ionization completely, those are strong acid. Examples of weak acid, these ones. All organic acids are weak acid, and those are strong acid. Okay. Yes, sir. So there is, I don't think there is need to write again this one. No, sir. Next, on the basis of concentration, we can concentration. On the basis of concentration, we can say acids are two types. That is, one will be dilute acid, and another one will be concentrated acid. Dilute acid means, dilute का क्या मतलब होता है? Water का amount more or less? More. More. So acid contains more amount of water, less amount of acid. Yes. Acid contains more amount of water and less amount of acid. ठीक है, इसका एग्जाम्पल्स नहीं है, ये हम लोग प्रिपेयर करेंगे कि डाइल्यूट मतलब वाटर में कितने वाटर में कितना एसिड डाल ऐड कर ले, उसके बेसिस पे ये फॉर्म होगा। मतलब जितने भी एसिड्स अभी तक पड़े, हम लोग वो सारे एसिड्स को डाइल्यूट भी बना सकते हैं, कंसंट्रेटेड भी रख सकते हैं, और ये कंसंट्रेटेड वाइस वर्सा होगा। ठीक है, Yes, sir. वाइस वर्सा होगा। Next, on the basis of their basicity, okay, ये पेज नोट डाउन हुआ completely? Yes, sir. Yes, sir. Done. Okay.
Depending on their basicity, acids are two types. Sorry, three types. Yes, sir. Okay? बेसिसिटी का क्या मतलब होता है? बेसिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ H plus ion donor. Okay, basicity means the number of H plus ion producing from acid. एसिड से कितने H plus ion प्रोड्यूस हो रहे? इफ वन H plus ion आ रहा है सो मोनोबेसिस 2H plus आ रहा है तो डाइबेसिस 3H plus आ रहा है तो ट्राइबेसिस. ओके. इफ सर हाइड्रोलाइसिस मतलब वाटर में दे देना उसको. हाँ, हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर के साथ रिएक्शन तो बोलते हैं हाइड्रोलिसिस. ओके सर. If acid releases only one H plus ion or produce is only one H3O plus ion, H3O plus ion in aqueous medium, then it is monobasis acid. ठीक है. जैसे एग्जांपल लो, मेरे पास एक ही हाइड्रोजन प्रेजेंट है HCl. HCl तो वाटर में ऐड किए तो क्या होगा? H3O प्लस प्रोड्यूस करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन अटैक करके आ गया Cl माइनस. ठीक है. तो मोनोबेसिक एसिड का एग्जांपल्स क्या है? HCl है, एसिटिक एसिड है. ठीक है. इवन नाइट्रिक एसिड है. जहाँ भी सिर्फ एक हाइड्रोजन आयनाइजेबल होता है दोज आर मोनोबेसिक एसिड. Look at here, in acetic acid total 4 hydrogen present, but only this hydrogen is ionizable hydrogen. Ionizable hydrogen. These hydrogens are not ionizable because पार्ट ऑफ एनायन. this is covalently bonded with carbon. हम लोग तो H प्लस चाहिए, मतलब आयनिक बॉन्ड में होना चाहिए ना, या फिर पोलर कोवैलेंट बॉन्ड पे, ताकि वो H प्लस बनते निकल सके. यस सर. But the according to structure, these hydrogen are covalently bonded with carbon, purely covalent bonded. So it will not ionize in aqueous medium. In aqueous medium, only those hydrogens will be released which are polar covalent bonded. That is with nitrogen, with oxygen, those only. Okay. So remember, in acetic acid, only these hydrogens, this hydrogen is ionizable, but these are not because non-ionizable, non-ionizable because those hydrogen, those hydrogens are attached with carbon by pure covalent bond, so they do not ionized. Okay. Similarly, if acids release 2H plus ion or produces 2H3O plus, then it is known as
डाइबेसिस, मतलब पूरा लाइन नहीं लिखे, पूरा लाइन लिख लेना है। एसिड रिलीज 2H प्लस आयन और प्रोड्यूसेस 2H3O प्लस आयन इन एक्वस मीडियम, वो कॉमन है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल्स क्या है, जैसे H2SO4 दो एसिड है, Yes. H2CO3 कार्बोनिक एसिड दो हाइड्रोजन है, सल्फ्यूरस एसिड H2SO3 दो एसिड है, ठीक है। ये सब हो जाएगा मेरा। सर H3PO4 भी तो है सर, डाइबेसिक एसिड। कौन सा? H3PO4। H3PO4, यस। H3PO4, हाँ H3PO4 डाइबेसिक है ना। हाँ सर, क्योंकि वो फास्फोरस के साथ एक हाइड्रोजन है ना, इसीलिए। नहीं, H3PO4 तो नहीं है डाइबेसिक, वो तो ट्राइबेसिक है। से सॉरी सर, फिर H3PO3 होगा हाँ शायद। H3PO3 होगा, H3PO3 हो सकता है, जिसमें फास्फोरस के साथ डायरेक्टली अटैच है, वो नहीं आयनाइजेस होता है। यस सर। हाँ वो लिख सकते हैं। ये H3PO4 का स्ट्रक्चर है, जहाँ पर सारे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ ही है। So it will be H3PO3 यस सर। and acid released 3H plus ion, then it is known as tribacid acid। जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग लेंगे H3PO4 का, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट, molecular composition on the basis of molecular composition। Molecular composition means, look at here, sometimes like HCl. In HCl there is no oxygen present, but in H2SO4, H2CO3, H2SO3, H3PO3, H3PO4, those acids contain oxygen. So some acids contain oxygen, some acids do not contain oxygen. Okay. So those which contain oxygen are known as oxyacid, and those which do not contain oxygen are known as hydracids. Because hydrogen तो present है, those are known as hydracids. यस सर। So we have tried सर स्कूल में ऑक्सो एसिड बोल के भी कुछ बोल रहा था। oxyacids, oxoacids। यस सर। हाँ, वो oxoacids भी ऑक्सीजन कंटेन करता है, ठीक है, जैसे उसी तो बोलते हैं oxoacid। सर ऑक्सी एसिड और ऑक्सो एसिड एक ही चीज है सर? oxoacid का डेफिनेशन क्या दिया है? सर डेफिनेशन नहीं दिया सर, कोई कोई एग्जांपल वगैरह दे रहा था सर, भूल गए, तो बोल रहा था उसके बारे में। पालोसोलिंतेज, नहीं oxoacid सेम है या डिफर था? ऑक्सीजन कंटेंट है, उसमें भी ऑक्सीजन कंटेंट है, ठीक है। कुछ शायद बेसिक डिफरेंसेस है, हम एक बार देखते बता देंगे। ओके सर। तो यहाँ देखो कि ऑक्सी एसिड क्या हुआ,
The acid contain oxygen atoms along with hydrogen and बाकी नॉन मेटल्स पार्ट है. Okay. Acid contain oxygen and some non-metal part are known as oxyacid. Examples: minerals acid. No, HCl भी आ जाएगा. H2SO4, HNO3, H3PO4. Those are oxyacids. Next, hydroxides. Acids which do not contain any oxygen but hydrogen and non-metallic part is present is known as hydroxide. Like examples: HCl, HBr, HI, ये सारा. Yes, sir. ठीक है. ऑक्सो एसिड्स जो है वो ऑक्सी एसिड ही है. ठीक है, वही सेम ही बात है. Okay, sir. मतलब वो ऑक्सीजन कंटेंट रहेगा वही ऑक्सो एसिड से. उसी तो ऑक्सी एसिड और मतलब अलग कुछ होता नहीं है. वही हम सोच रहे हैं कि सेम है तो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उसी तो बोलते हैं ऑक्सो एसिड. तो अभी देखो जस्ट हम लोग आयनाइजेशन का प्रोसेस देख लेते हैं, तो बाद में ये समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा. ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास H2SO4 है. So H2SO4 we know it is a dibacic acid. So it releases two hydrogen, but two hydrogen not at a time. When H2SO4 is added in water, at first it releases one H plus ion. So it will form H3O plus. H plus will attach with H2O, so form Yes. H3O plus And HSO4 minus. and HSO4 minus. In next step, HSO4 minus will again release water, again release H plus in water, then it will again form H3O plus, and now it is form SO4 2 minus. Okay, so we generally we write summarization that H2SO4 releases 2H plus and SO4 2 minus. Yes, sir. Okay.
नेक्स्ट हम लोग अब जाएंगे एसिड का टोटल हो गया, उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है एसिड, उसका आयनाइजेशन प्रोसेस, दिस इज आयनाइजेशन ऑफ एसिड। सर 750 से मेरा स्कूल का क्लास है। 750 से बहुत पहले कर दिया, सर कितना बज ऐसे रहा है? होता था। तो 742 हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो सिंपली देखो, जो H3PO4 है, H3PO4 पहले क्या फॉर्म करेगा? इट विल फॉर्म H2PO4 माइनस, ओके। इन नेक्स्ट स्टेप H2PO4 minus will release one more hydrogen to form HPO4 2 minus, and in last step HPO4 2 minus will release again hydrogen to form PO4 3 minus. All the processes are reversible, okay? All the processes are reversible. Sir, this H2PO4 is minus, or that's just a compound? H2PO4 minus, yes, minus this compound. सर तो माइनस अगर होगा तो सर चार्ज मतलब ये कैसे हुआ सर? माइनस इधर और उधर, उधर भी माइनस प्लस ऐसे? नहीं समझे, यहाँ पर माइनस और यहाँ भी माइनस, ये बोल रहे हो? हाँ सर। तो H2PO4 माइनस से जब H प्लस और रिलीज कर दिया तो ऑल माइनस आएगा ना। ओ अच्छा, यस। तो ओके वही सर, तो यहाँ पर जैसे H प्लस रिलीज हुआ तो माइनस अपने तरफ आया, तो लेस्ट ऑफ द पार्ट के ऊपर माइनस आया। अब यहाँ से ऑलेथ हाइड्रोजन चला जाएगा तो इसके ऊपर ऑलेथ माइनस का लेफ्ट होगा, फिर यहाँ से ये भी हाइड्रोजन चला जाएगा तो ऑलेथ माइनस का लेफ्ट होगा। यस सर। सब्सिक्वेंट वे में हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, सब्सिक्वेंट वे में माइनस चार्ज ज्यादा नहीं हो रहा है। ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स, या फिर छोड़ दे नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, क्लास है ना? हाँ सर। ठीक है, तब नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। ओके सर, थैंक यू सर। ओके।